Yes, yes. It is fees. Which Okay, sir. this group is G1. G1. Okay. It is showing loading. Yes, sir. Okay. Little bit slow. Okay, sir. Good afternoon, one and all present over here. Our project name is Fish Management System by ACIT Java Mini Project from College MGM College of Engineering and Technology, Kamote. Our members are myself, Aryan Nipane, and Manish Thorat, and Tanmay Mhatre, and Aditya Raj. The content is introduction, aim, problem statement, motivation, literature review, advantage, data flow diagram, and entity relationship diagram. So our introduction is in this current situation, not only students, teachers also can't go to institute for handling the record of fee. Therefore, me and my friends propose the fee management system. In this system, data are safe because of only authorized person can see and access the data of course, fees and students information. The authorized person and can fill the information of student and print the fee receipt by this data is in consistent state, and the data system will be efficient and fast in response. The system will be customized according to the needs. Our aim is to the fee management system is a desktop system aimed at maintaining student record and their fee details. It also generates records like fees, fares, payment mode, etc. The system requires small amount of time to generate reports needed to manage the fees of the students. Our problem statement was to design a module which is user friendly, which will restrict the unregistered user from accessing data, which will help user in viewing students' data and records, which will help the administrator to handle all the changes. Or motivation. Due to traditional fee management system, data storing is on paper. Because of this, data is inconsistent, insecure, not reliable, as well as there is more probability of administrators to do human error. We want teacher and faculty to add data efficiently, faster and easier. We can add more features to this software for making it more advanced and to reduce human error and data inconsistency. Literature review. Fee management and collection are crucial for a college administration. The current existing fee collection system is very long and tiring manual process. Due to human error, minor miscalculation, or wrong data entry leads to more work and wastage of more time. Due to fees management software, administration in schools and colleges has become handy and more efficient. Data backup with synchronization coupled with increased convenience, reduced redundancy, transparency, and customizable modules make a win-win situation for this program. And it is environment friendly because use of paper is reduced. Advantages are all financial data is secured, easy to understand and control user interface, generate invoice, bill reports, calculate tax and GST, control finances of your institute, insert, delete, update course details. Software is platform independent. Export data to Excel file. Our data flow diagram. So this admin will go to sign up page to sign up by his data, and this will insert in the sign up table in database. Then again he will go to login page, and then it will check that the data he has put there is correct or not. If it is corrected, then it will go to add fees page. Then it will put the student's details and the course that student wants. Then it will put insert the data in fees details table in database. Later on, it will be go to view records of students, and it will take records from fees details table and show it to admin. And later, admin can do update, add, and delete the course in the course table from database. And ER diagram. We have three tables in our database. One is admin table,
one is fees details, and one is course. The admin will add record in fees details table, and the fees details takes the uh, data from the course. And admin can also edit the course. That's it, sir. Thank you. Sir, we want to show our software too. Hello, sir. Yes, sir. There is one more slide. Yes, this is last slide. Hardware and software platform. Our software requirements are in the project. The software requirements are as follows. Language for development is Java and SQL. Database used is Derby. Hardware requirement for software is minimum RAM is 1 GB, minimum storage 10 GB, minimum processor AMD Sempron TM and Intel Pentium 4. Operating system software is platform independent, so no operating system is minimum required. Okay, sir. Thank you, sir. Hello, sir. Can we show our software? Sir, you are not audible. Hello, hello. Am I audible? No. Yes, Yes, sir. Now, sir. sir. Okay. So next student, you wait here. Okay. The next Sir, we student, want to display our software. you can. Yes, you can do that. Okay, sir. I will display our software. Hmm. We had created our exe file here. So this is our software installer. We have created this, and this is our exe file, software exe file. So I will run this exe file. So this is the splash screen of our software, and this is the login page. If user is not done a sign up and put his record in the uh, sign up table, then it will show error. Let me do. Admin is not there in a sign up table, so it will throw error. So it will not allow me to log in. It will say wrong username or password. Then I will go to sign up page, and I will do sign up by my name or admin, and here also admin I will put. Username also admin. Password I will select 1 2 3 4 5 6 7 8 9. It will also check that password should be of 8 digits. It should be not less than 8 digits. Let me put again 2 3 4 5 6 7 8 9. And confirm password will check the password that is same or not. Date of birth and contact number. And it will also check contact number should be of 10 digits only, not more than 10 and not less than 10 also. 10 digits. Now I will do sign up. Now record are inserted in the sign up table. Now I can log in to the software. Login. Login is successful now. Now this is our home page. Now from home page we can do add feed, search record, view record, edit course, view course and view report. And we can also go to logout and about section also there. Now we have to add the new course to the software. Now we can go to edit course, and we can now add our new course by you giving course ID. I will give you 2, and name will be
DBMS, Database Management System is course name, and value will be, let's see, 3000. And I will insert it in a table. Now it will show course inserted successfully. It will reflect here. And if you want to delete any course, we can select that course and we can use. ऐक काय सांगतो हॅलो Yes, sir. आपका ये कोड दिखाओ कोड कोड एक्सप्लेन करो What, sir? Yes, sir. Coding. कोड होगा ना इसका जावा में का हाँ, yes, sir. Yes, sir. किसमें किया है Neat. इंटेलिजे NetBeans, sir. NetBeans. फिर नेटबिन्स और पीपीटी दिखाओ आपकी जब तक ये होता है तब तक हाँ फीस मैनेजमेंट और नेक्स्ट सर पीपीटी हो गया था ना पहले हाँ स्टार्टिंग में. नहीं ठीक ठीक है एक बार फिर से देख लेते नेक्स्ट Okay, sir. नेक्स्ट स्लाइड इसका बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा आपको क्योंकि वो ज़्यादा ये हो गया डार्क हो गया अच्छा, तो कौन सा कलर ठीक रहेगा सर? कोई भी डाल दो लाइट वेट लाइट कलर. हाँ नेक्स्ट ये हो गया कंटेंट, कंटेंट ओके हाँ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड एम, एम एंड नेक्स्ट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मोटिवेशन. प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या डाला दिखाओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट में which is user friendly which restrict the unregistered users from accessing the data record and handle all the changes so your problem what is the problem statement you have to write down here what is the problem with the previous system that you should write over here okay next लो मोटिवेशन, motivation ठीक है next लिटरेचर रिव्यू, okay एडवांटेजेस. एडवांटेज में फॉन्ट थोड़ा बढ़ाना चाहिए था हाँ ये सर वो छोटा हो गया हाँ है. ठीक है नेक्स्ट क्या है और डेटा फ्लो डेटा फ्लो डायग्राम है. डायग्राम दिखाओ डेटा फ्लो डायग्राम क्या है वहाँ पे एडमिन एडमिन साइन अप लॉगिन ये एड्रेस देन व्यू रिकॉर्ड ऐड और अपडेट और डिलीट और इंसर्ट डेटा इनसाइड दिस ये क्या है टेबल है क्या साइन अप डिटेल्स हाँ सर ये साइन अप टेबल है, फिश डिटेल्स टेबल है और एक कोर्स टेबल है. ये 3 टेबल्स हैं डेटाबेस में. ठीक है और दिखाओ नेक्स्ट और ईआर यार डायग्राम है. डायग्राम हम्म ठीक और है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म. जावा एसक्यूएल एंड डेयर बाय okay then minimum ram is this okay next slide नहीं सर लास्ट स्लाइड भी last slide है यस ठीक है then you should put the screenshot of your output means software this screenshot windows हाँ screenshot. ये वाला Okay इस sir, पे ये each and डालना every पड़ेगा place, हाँ नहीं each कुछ and नहीं every place. इम्पोर्टेंट जो है वो डाल दो उसमें उसके बाद में कंक्लूजन भी बाकी है आपकी इसमें का पीपीटी में Okay, आपका कंक्लूजन conclude. बाकी है और ये इसके जो स्क्रीनशॉट है वो बाकी है Okay sir. ठीक है और रिपोर्ट वगैरह बनाया क्या आप लोगों ने वो लैब जर्नल लैब. ठीक है वो मनी सर देख लेंगे हाँ सर. ठीक है दिखाओ कोडिंग सर ये हम लोग का प्रोजेक्ट का फाइल है फोल्डर है और हाँ इसके ओके अंदर सोर्स पैकेजेस में फीस मैनेजमेंट सिस्टम में सारे पेजेस की कोडिंग है. हम्म तो सबसे पहले हमने साइन अप पेज की कोडिंग की. तो ये है. यहाँ पे सबसे पहले लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया जो एसक्यूएल की लाइब्रेरी ठीक यूज है है उसको इंपोर्ट किया. बाद में डेट
ये करके एक लाइब्रेरी है, उसको इंपोर्ट किया क्योंकि हम डेट भी ले रहे हैं यूजर से। देखो आपका ये और ये देखो ऑप्शन पे आउटपुट, आउटपुट देखो। सर ये है आउटपुट। हाँ, तो इसका जो बैकग्राउंड है ना, वो आप मुझे इसमें करके दिखाओ अभी। इसमें ब्लू में, ब्लू में। सर ये सेकंड पैनल का बैकग्राउंड। हाँ, कोई भी एक पैनल का बैकग्राउंड जो है वो ब्लू में करके दिखाओ अभी। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले पैनल को सिलेक्ट करेंगे ये वाले, और बाद में प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक प्रॉपर्टी है तो वहाँ पे जाएंगे और हम्म, थ्री डॉट पे सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमें कलर का पैलेट मिलता है, और बाद में यहाँ पे हम HSV HSL अलग अलग फॉर्मेट में कलर भी डाल सकते हैं। हाँ तो फिर तो डालो ना वो। अभी ब्लू कलर डालता हूँ। ये वो हम्म, टेक्स्ट का कलर अभी मैच नहीं कर रहा उसके ऊपर। लाइट डार्क डालो उधर। ठीक है। अभी सर। हाँ, ओके ओके। सर और वो आगे का सॉफ्टवेयर दिखाऊँ? हाँ दिखाओ दो। हाँ, तो हम यहाँ से कौन सा भी कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से हम डिलीट बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो अभी मुझे जावा का कोर्स डिलीट करना है, तो यहाँ से डिलीट दबाऊंगा तो कोर्स डिलीट सक्सेसफुल हो जाएगा, और कोर्स हमारे डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगा। और यहाँ अच्छा, वो सेकेंड वाला सिलेक्ट हो गया था। तो अभी और एक नया कोर्स मुझे ऐड करना है, तो मैं अभी ऐड करता हूँ DBMS, और कोर्स का प्राइस डालता हूँ 5000, और इंसर्ट करता हूँ। अभी मुझे इसका प्राइस चेंज करना है, 5000 से कुछ अलग करना है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से प्राइस को चेंज करके रखूँगा 4000, और यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा। तो कोर्स अपडेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे DBMS का प्राइस 4000 हो गया 5000 से। अभी हमने कोर्स ऐड कर दिया, यहाँ पे हम ऐड फीस करेंगे। तो यहाँ पे कैश में है, DD में है और चेक में है, तो हम DD में करेंगे, तो यहाँ पे बैंक नेम और DD नंबर का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे बैंक नेम डालता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, एंड DD नंबर को रैंडम नंबर डालता हूँ, और यहाँ पे हम डेट सिलेक्ट करेंगे जो आज की डेट है वो, और यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम रहेगा वो हम डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डालता हूँ जॉन डोय, द फॉलोइंग पेमेंट इन द कॉलेज ऑफिस फॉर द ईयर। तो कोर्स का ईयर कितना रहेगा, तो मैं डालता हूँ 2021 और वो लेने वाला है DBMS का कोर्स। उसका रोल नंबर लेते 05, और ये सर ये कोर्स का टोटल अमाउंट है, और उसमें एडिशनल ये हुआ है CGST ऐड हुआ है और HGST ऐड हुआ है, और जो ठीक टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे आएगा, डिस्प्ले हो जाएगा है, फोर ठीक है, सेवन ठीक टू है, ठीक है। जीरो हो गया आपका? हेलो? क्या सर? हो यस गया सर। क्या? नहीं सर, और है ना। दिखाओ। अभी इसे प्रिंट रिसिप्ट भी कर सकते हैं, ये रिसिप्ट बनाया हमने, हम्म, तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है, और इसमें से PDF फॉर्मेट नहीं तो प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से। हम्म। वापस अभी यूजर एडमिन को देखना है कि किसने किसने एडमिशन लिया है, क्या मतलब फीस किसने किसने पे किया है, तो यहाँ से वो देख सकता है, और यहाँ से सर्च भी कर सकता है कौन सा भी नाम डाल के। अभी मैं डालूंगा तो यहाँ पे वो आ गया मेरा नाम, और यहाँ पे पूरा लिस्ट है। बाद में कोर्स लिस्ट देखना है तो कोर्स लिस्ट पे जाएगा, और यहाँ पे कोर्स लिस्ट दिखाई देगी पूरे। बाद में एक पेज है व्यू रिपोर्ट नाम से, तो यहाँ पे पूरा हम रिपोर्ट बना सकते हैं। तो अभी DBMS में किसने एडमिशन लिया है फ्रॉम डेट, तो 1 डेट से अभी तक का किसने किसने लिया है वो देखेंगे, और उसका टोटल अमाउंट भी आएगा कि टोटल अमाउंट कितना कलेक्टेड हुआ है वो कोर्स से।
और इसको हम एक्सपोर्ट टू एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे उसका पाथ डाल के। अच्छा, और दैट्स इट सर। About What about view यस सर। report? What about view report? व्यू रिपोर्ट सर, ये व्यू रिपोर्ट में हम कौन से कोर्स में कितना कितना कलेक्शन हुआ है ना, मतलब फ्रॉम डेट से टू डेट तक, मतलब 2 महीने में, 3 महीने में, नहीं तो 1 महीने में कितना वो कोर्स से अमाउंट कलेक्ट हुआ है, तो वो हम देख सकते हो किसने कितना एडमिशन लिया उसमें। तो अभी DBMS में देखेंगे और यहाँ से मैं Can we? वन डेट Okay, डालूंगा। okay, okay. Can we add visualization? Can you add some graphical representations? मीन्स सर? Whatever the records are there now, so that Yes, record should be shown on the graphical representation. Is it possible? Sir, I can export it to Excel file and we can see it in No, Excel no. folder. You convert the Excel, no issue. Okay, whatever the records are there, all the records are stored in the Excel, no issue. Okay, Yes, sir. but I want to show the graphical representation. That is visualization. Any visualization like graph, any graph, bar graph, or anything. So is it possible? Yes, it will be possible, Okay. but we have to Then research more on it. add this feature, so it will good for your project. Okay. Sir. We will add it. Okay. Yes, sir. Make note this thing. So this is the project is, if you are in the any project, if you are showing some graphical representation, that looking is good, that project looking is good, right? Yes, sir. And one more question, one more I think I would like to ask one thing. What is the backend for your project? We use the SQL language for database and we use DBMS Derby. Okay, okay, fine. All these things is good. Okay, just add this feature. That is what the visualization. You are using what NetBean, right? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, not an issue. So add these features. That is visualization. Graphical visualization, sir. Are you getting my point? Yes, sir. We have to show Yes, sir. the graph of the collected amount or student Yeah. enroll like that. So that it is a good. Okay, if you are showing the graph now, then that project is good looking. Okay. Yes, sir. We will do that. Okay. Fine. We will do that, sir. Okay, fine. What is the name of your group? G1, sir. G1. Okay. Okay, fine. So is it complete all project? Yes, sir. Yes, sir. Complete. Yes, sir. Okay, fine. Then next. We had created exe file of it. Okay. That is, we are It simply is creating on. applications, right? So I can Yes, sir. install that exe file can install in any platform. Just only Yes, Windows. sir. I have created installer, sir. Okay. Okay, install it. Okay, sir. I have already installed it in my folder. Let me delete it first. Okay. In local disk C, this is FMS 101. I No will issue. delete it first. No issue. Okay. I got I it. can again install. Okay. I got it. Just add this feature. Okay. Yes, sir. Graphical visualization. Okay. So next. Sir, I will stop sharing my screen. Yeah, next group. What's the next group? G2. Yes, sir. Okay. So be ready. G2 group, right? Yes, sir. Okay. Sure. Hello, sir. Yes, audible. Yes. Good afternoon, sir. Our project name is Hotel Management System. We have four numbers.
4 members, Teja Jaiswal, 14 roll number, Pravesh Lohar, 90 roll number, myself, Siddesh Gavde, 10 roll number, and Kunal Patoe, 35 roll number. Introduction to this project. Our project Our project is on hotel management system. In this project, we have used file handling interface, switch case, array list, inheritance. This program is helpful for maintaining record of a customer of a hotel. This project is a sample console application designed to demonstrate the practical use of a Java programming language and its feature, as well as to generate the application which can be used in the various hotels. It's aim aim of this project to maintain the record of customer in the hotel. These benefits are: it helps to maintain the record. We learn how to implement the program. There are many features used in a single program. It helps us to improve our programming skill. It can be used in a standalone and online booking of rooms. Course outcome: program using array. This source program using constructor, program inheritance, program using interface, program using file handling. All the features are used in our micro project. Literature survey. Hotel management is a software to book the room in a hotel. This project maintains record of customer in which we can add customer information. Earlier day in hotels, all the data is stored in a register or book. So it become difficult to manage it. It is not secure because any of one access it. It is a time consuming method to overcome this program. To overcome this problem, our software will help. Our software provides number of room according to necessity of the customer. Because of this software, we can easily access record of any customer. Any hotel can use this managing the record. Use it for managing the record. Actual methodology follow. First, first of all, we decide the topic, and after that, we learn Can you in show the details. demonstration? Yes, sir. Can you show the demonstration implementation? Sorry, sir. Do you have any implementations? अरे implementation complete किया है project? नहीं नहीं सर, नहीं किया है. नहीं किया है सर. How much percent you have completed? 35 to 40%. 35 to 40%. When will be completed the whole project? सर अभी 2-3 दिन में हो जाएगा. 2-3 दिन में हो जाएगा. Okay, what is the existence methodology to your project, and what you are going to do? Just tell me. Sir, we have do all the facilities in the app for hotel management. Example, Do you all have the do you make Android applications or Java application? Java application. Okay. All the facilities are used in this app. So that's why I'm telling you what is existence technology. Existence क्या है वो देख क्या उसमें क्या overgap मिला है. Based on this overgapping, you are trying to implement your project. Just explain me any architecture diagram. This is the diagram. This is ER diagram for my You don't our have any project. architecture diagram. Not sir. Okay, okay. Explain your diagram. Okay sir. This is our project ER diagram. In this, manage and has
Then the login user, they are connected with that roles, permission, payment, hotel, booking, customer, and all these have main branches and सर uh, कुछ तो भी इम्प्लीमेंट किया होगा ना, लाइक फ्रंट पेज, सेकंड पेज, कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट किया? नहीं सर, मतलब नहीं किया है सर इम्प्लीमेंट. अरे ओके, कंक्लूजन बोलो, व्हाट इज योर कंक्लूजन? Our project is on hotel management system using Java. We have that not. We take this opportunity to express our sense of independence. अरे इन योर प्रोजेक्ट हाउ मेनी पीपल्स आर देयर? 4 people, Okay, sir. what is the contribution of other people? Sir, in our group, only one have a laptop, sir. Yeah, no issue. Only One one member laptop have is a no laptop. issue, but at least idea is four, na? You don't Ah, yes, sir. Yes, sir. four members is getting four ideas. Yes, Okay. sir. So hotel management system is a simple general terms, right? Everyone knows that, and that kind of the application is already available. So based on this available application, what exactly you are doing as a new feature? What new features you are added? Or same project you are doing, जो एग्जिस्टेंस है वही कर रहे हो क्या, कुछ नया फीचर ऐड कर रहे हो, ऐसा कुछ है? Because कुछ try. when you are searching this project now, when you are searching Yes, this sir. project on Google or YouTube, so many what do you call, the links are available as it is projects is available in the internet. Am I right? Yes, sir. Ah, yes, sir. So Yes, sir. what is the contribution of you people? Just tell me that thing. Contribution. मतलब चार लोगों का कंट्रीब्यूशन क्या है? हु इज अ डेवलपर, हु इज अ बैक एंड डेवलपर, कौन फ्रंट एंड डेवलप कर रहा है, कौन बैक एंड डेवलप कर रहा है, कौन रिकॉर्ड मतलब कौन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहा है? सो क्या कंट्रीब्यूशन है चार लोगों का? ओनली वन पीपल आर डूइंग? वो मतलब एक मेंबर कर रहा है और हम उनको ये दे रहे इंफॉर्मेशन दे रहे अबाउट बैक एंड फ्रंट एंड मतलब कोडिंग. सो ये जो आइडिया है होटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये कहाँ से मिला? इंटरनेट से मिला है ना? हाँ, इंटरनेट से मिला सर. तो ये ऑलरेडी बना हुआ प्रोजेक्ट है, तो आपने क्या कर रहे हो इसमें? आप वही देख देख के इम्प्लीमेंट कर रहे हो कि कुछ नया ऐड कर रहे हो? ट्राई करेंगे सर कुछ नया ऐड करने का. ओके, ओके फाइन, ठीक ओके है. सर, थैंक यू सर. नेक्स्ट ग्रुप. This is your literature survey, right? Look at the authors. Okay, there have mentioned the year of paper 2010. 2010. Now which year going? 2021. So how much different for 2010 and 2021?
Yeah, because this technology, this application already built up, right? In 2010, if you read this paper in 2010, so that application is already built, right? Okay. So, in my point of view, you have to search recent paper like 19. It's okay. 18 is also okay. 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 Go ahead.
Okay, just show. Okay, okay, no issue. You can do. So this is the admin page, right? The name and password. Okay. Admin is login, verify registration. How we can verify the registration? Based on which? So these are all the fields, right? Username, player one, Aadhaar number. So why not assign the some? All these fields are mandatory, like in asterisk symbols. When you are filling the any forms, that time they will ask this field is mandatory. If this field is not filled, then this form is not submitted, right? So you can valid all the fields. Okay, fine, and make some good backgrounds. Okay. Mhm. Okay, 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 fine. And add some what do you call the features like visualization, any graphical representation, like you mentioned their statistics, right? Yeah, yeah. Yes, yes. That kind of stuff you can add, like any graphical representations, like in what do you call the line graph or some pie chart graphs or anything. Okay, that look is good. Okay, okay, fine. Then it's okay. Okay, okay. I think all is over. Anybody's remaining? Any group is remaining? Okay, those who are completed, just log out the meeting.